कोई भी मुल्क में आप चले जाएं, 15 से 17% आबादी उस मुल्क की अफराद बहा माजूरी होती है, वेरिएशंस। उसमें आप मेंटल हेल्थ को अगर शामिल कर लें और पाकिस्तान में अगर हम उनको फ़िलहाल के लिए निकाल देते हैं, फिर भी 12% आबादी आपकी कहीं भी पाकिस्तान में नहीं जाती। अब 12% ऑफ 240 मिलियन, यू डू योर ओन कैलकुलेशंस, आपको अंदाज़ा होता है कि 30 मिलियन से ज़्यादा का नंबर है। A population the size of Karachi suffers from disability, and when we did some research, we found out that 95% of them do not have access to quality health and education. That's criminal for any society. We were initially created as a network of organizations, ताकि जो कि मुनफरिद तरीके से माजूरी पे जो लोग काम कर रहे हैं और इदारे जो काम कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, उनको एक प्लेटफॉर्म दी जाए ताकि दे कैन कम टुगेदर एंड शेयर रिसोर्सेज, हैव सस्टेनेबल थॉट प्रोसेसेस दैट कैन बी रेप्लिकेटेड। बट ओवर टाइम वी रियलाइज़ कि ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें और करने की है। We could have easily done, हम एक स्कूल बना देते छोटी सी, हमारे दिल थोड़ा खुश हो जाता कि we've done our part. But we said no. So we did focus group sessions in Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, to really understand with all the stakeholders what exactly is the problem. So we evolved and became a programmatically driven organization, जो कि हर पहलू जो होता है अफराद बहा माजूरी का इस मुआशरे का हिस्सा बनने के लिए उस पर काम करता है। अगर हम बिल्कुल लेमन टर्म्स में आपको बताऊं कि उनकी शनाख्त से लेकर उनकी खुद मुख्तारी तक हम उनकी राह हमवार करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि दे आर ए पार्टिसिपेटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड देयर वॉइस इज़ हर्ड लाउड एंड क्लियर इन पाकिस्तान। Honestly, I got really exposed to it with NOWPDP when I was at the State Bank, and they came in and presented this. Largely focusing on accessibility and training for employees who are differently abled. When you're at regulators like this, people come and see you all the time and leave varying impressions, right? And this impression was of passion, competence and institutionalization. So I think that was the recipe that attracted me. We are very proud that we were able to enshrine laws across all provinces in 2018 for persons with disabilities, which cover everything. तालीम को कवर करते हैं, शनाख्त को कवर करते हैं, हुनर को करते हैं, रोज़गार को करते हैं। फिर हम लोगों ने ज़ीरो प्रोजेक्ट जो UN रिकग्नाइज्ड अवार्ड जो इस साल हम लोग फिर जीते हैं, वो 2018 में हमने हुकूमती बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए किया था। दैट वाज वन थिंग। वन ऑफ द मोर यूनिक प्रोजेक्ट्स दैट ऑन द पेपर has not been super successful because of not being scaled up, but in our mind was a huge statement, is the rickshaw project. कि जो जिस्मानी तौर पे माजूर लोग होते हैं उनको हम लोग ने रिक्शा उनके लिए बनाया और उनको रिक्शा चलाना सिखाया। अगर आप शहर कराची और शहर लाहौर में रिक्शा चला के जिस्मानी तौर पे माजूर हो के अपना लाइवलीहुड कमा सकते हैं और अपने मंशूर को सामने ला सकते हैं, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। हमारा जो 1998 का सेंसस था उसके मुताबिक तकरीबन 2.47% लोग अफराद बहा माजूरी थे मुल्क के अंदर, जो कि उस वक्त की मुनासबत से बनते थे 3.3 मिलियन पीपल। कम टू 2017 ये नंबर 10 लाख से गिर चुका था नीचे, 0.4%। सो आइदर वी बिकेम द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, जहाँ हमारे पास हर प्रॉब्लम और हर डिसेबिलिटी की सोल्यूशन अगर उनको हम लोगों ने एक्विटेबली और मेडिकली रिजॉल्व कर लिया, या तो देयर वाज सम अदर प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम वाज द डेटा डिड नॉट showcase persons with disabilities in their entirety. Most people who belong to a minority, shall we say, always lack confidence, right? Almost always. It's a natural thing. Persons with disabilities को पाकिस्तान में एक तो शऊर नहीं है कि उनके लिए एक स्पेशल शनाख्ती कार्ड है और उसके फ़वाइद का भी अंदाज़ा नहीं है।
if persons with disabilities can get this shanakht, then they immediately, I would think, start to feel of themselves as a separate individual, not somebody who hangs on to someone's help all the time. अगर सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता जैसे आपके और मेरे लिए है कि हमें खाली नादरा के दफ्तर पे शो अप करना है और हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी है और उसके मुताबिक हमें एक कार्ड मिल जाएगा, दैट वुड हैव बीन सिंपल. बट होता क्या है कि हर सूबे के अंदर 3 से 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं सूबाई सतह पे, जिनके पास इनको जाना पड़ता है वेरीफाई होने कि देयर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी. अब ये वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है पूरा, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है, सोशल वेलफेयर भी शामिल है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ भी शामिल है, एक ज़माने में लेबर डिपार्टमेंट भी शामिल था. और इन सब डिपार्टमेंट्स की जो ऑफिस लोकेशंस होती हैं वो ऐसी जगहों पे होती हैं कि पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट देयर. या एक तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है, फिर जिन बिल्डिंग्स में जहाँ ये मौजूद हैं वहाँ रसाई मौजूद नहीं है. सो इवन बिफोर यू गेट टू योर शनाख्ती कार्ड एट नादर, आपको 4 से 6 महीने रुलना पड़ता है. एक इंसान आया था हमारे पास, एक बड़ा काबिल इंसान था, हम सजावल में कैंप कर रहे थे, वो नंगे पांव चलते हुए आए, विजुअली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड. और हमने पूछा कि भाई आपको इतनी बेचैनी क्यों है, आपको इतनी बेहिसी क्यों है कि जल्दी, कह रहे आज के बाद मुझे शायद मौका मिले ना मिले शनाख्ती कार्ड बनवाने का. हमने कहा आप नंगे पाँव चल के क्यों आए, कह रहे मैं पाँव की और ज़मीन की तपिश से अंदाज़ा लगाता हूँ मैं किस ज़िले में और किस इलाके में चल रहा हूँ. द डेस्परेशन ऑफ द मैन वाज सच कि वो गर्मी में, धूप में, पाँव की तपिश से महसूस करता हुआ हमारे दफ्तर पहुंचा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसके बाद शनाख्ती कार्ड का 1 विंडो कैंप कहीं और लगेगा कि नहीं. ऐसी कहानियाँ गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ठट्टा बदीन तक हमारे पास हज़ारों में हैं. People often tend to put NGOs into one sort of category and sometimes say that, oh, we don't know where the money is going, I don't know what they're doing. So if it is very public, very transparent, and you know exactly what's going on, and it is open to anyone who wants to see it, and of course you see the impact, then that's very important to have a board with independent directors, a good set of auditors, perhaps internal audit, proper HR systems, proper reward systems. It's very, very important, and how people are compensated in their performances and so on. Just put in all the corporate structures that is possible without bringing in too much extra cost, obviously. Therefore, now we have board of advisees, board of governors, we have management, which is very professional. So we are creating all the infrastructure of a good corporation. We are not donor driven. Donor driven में मसला ये आता है कि it's always the tail wagging the dog. So if I get a lot of funding, then I have to please my donor, right? And then there are compliance and then file. What you don't realize is your real customer is the people on the ground. While I think we as civil society, it is our job to be very critical of our leaders and hold their feet to fire. However, whenever they do something good, we can't be drown in cynicism. We need to not only acknowledge, but we need to collaborate with them, right? And leave our judgment and our biases on the side. So our experience has been fantastic, to say the least, with Sindh government. I have the secretary coming to my office saying, okay, how do you, because they see that we do concrete stuff, right? सूबाई सतह पे भी और फेडरल सतह पे भी हमें सपोर्ट बहुत मिली है, और इसके भी रीजंस हैं. आई थिंक देयर आर एक मिक्सचर है पर्सनल रीजंस का भी, चूँकि जो अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकर्स जो ऐसी जगहों पे मौजूद हैं और जिनका इंटरेस्ट है डिसेबिलिटी में, उनकी पर्सनल सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ उनके पास फैमिली मेम्बर्स भी हैं जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं. पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ सिंध को मैं पर्टिकुलरली अप्रिशिएट करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि उन्होंने तो यूनिफाइड डिपार्टमेंट बना दिया है जो कि केटर्स टू ऑल मैटर्स रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, एंड देयर दे हैव अ लीडरशिप बोथ एट द executive level as well as the bureaucratic level that is driving sustainable, effective change through public-private partnership. I think there has been tremendous progress. 250 plus organizations want to play ball.
बाहर के जब एक्सपोर्टर्स आते हैं, आपके जो मेजर कॉर्पोरेट्स हैं लाइक वॉलमार्ट, टारगेट, we are the institution that these textile companies put forward to showcase that there is inclusion that is being done. You go in a company and you look at the company's job is not to give you charity, right? It's to make profits. So if I tell you, okay, please give me part of your CSR, you might give it. You're giving to a few other charities, हमारा भी एक list पर आ जाएगा. You might give it for 1 year, next year we'll see. You might avoid my call 2 years down the road. Yeah, please give me some money. However, if I give you a value proposition, right, where you as a capitalist organization, it improves your corporate org culture. If you're going to be utterly commercial in it, it gives brand value. If you take away the good that you're doing, and if you want to put it to a side, then it actually improves your brand. And a lot of big brands do this, right? It has to be real. It can't just be, hot air. But if it's real, and if you convince them that their brand value will go up, and the people they hire are just as commercially viable and productive as anyone else. So therefore it doesn't become, oh yeah, this is something I'm doing because I want some sawab, right? And eventually it's about literally moving the needle on your country's GDP. There's an economic value because you have a size of Karachi that's under the radar screen. If you can bring from a liability on your balance sheet to the asset side, there's a huge value proposition. जब हमारे कॉलीग यहाँ से निकलते हैं नॉर्थ कराची के लिए और मेट्रो लाइन लेते हुए who's visually impaired, completely blind, travels by himself to North Karachi and gets off, takes a rickshaw and goes to his home. When you see these individuals who are deaf riding and zipping around on motorbikes delivering Bykea, that to me is always surprising, no matter how aware I become of this. When I saw the rickshaw being driven for the first time by a person with physical impairments who had no lower limb usage, and that person was advocating for the rights, that was also something that blew my mind. So the beauty of the work that we do is we find inspiration every day of the week without trivializing the word inspiration. We have come a long way. We have created this thing. We are pushing every one step at a time, crossing the river, every pebble, and the doors open. The universe conspires to make it happen. And Alhamdulillah, we are growing. We've grown about 100% in the last 2 years. The trajectory seems like another 100% growth in the next another 2 years. Everyone has been cooperative. We have our basic business models, the building blocks, and we feel that we are making the impact. We offer the value proposition, and we are getting many stakeholders who are seeing that and are collaborating with us.